Are you ready? Yes, sir. Good. You are appearing for which post? Financial analyst post, Central Fin Bank of India. Correct. Financial analyst post, Central Bank of India. Yes, What sir. what made you develop a liking for this position? Sorry, sir. What what made you? What is the reason for opting to apply for this position? Because this position require a chartered accountant can analyze the financial statement in very well manner. Like he during his course he read about financial statement like balance sheet, profit and loss count, cash flow statement, and this profile also requires same portfolio, which means he can easily understand different kind of ratios, different kind of statements he can easily read out. Then I have such knowledge about how to read balance sheet, how to interpret it, how to conclude decision from the balance sheet. That's why I joined this profile of financial analyst, because I have knowledge about that, Mm. how to read financial statements. No, but can you improve your answer? Because it is okay, you say for this, but is that the reason for your coming to my central bank? But you were telling me something else, that you are now working for some RRB. Don't tell the name of the RRB and all. You are working for some RRB, and your posting is going to be within that state only, which is not your home state, or which is not the place where your husband is also working, correct? Yes, sir. Correct. So you can come out frankly with the reason. But the reason for my preferring to join this is that, number one, because the pay scale is going to be same as that you are now drawing. Yes, sir. Salary and other particulars are going to be the same. The only thing is, you can say that I will have an opportunity to be of service in, say, my own state, or in the another place where my husband is working, and that will give me hope of improving my career also. And not only that, the career prospects in this bank is much better than the bank in which I am now working. Correct? Yes, sir. Okay. That is the actual reason for which you are willing to come to another bank. Join the Central Bank of India. Yeah, Yes, sir. yeah. So this is what it is. Now, can you try and present it in a way that you are happy? Please tell me. Okay, sir. I want to join Central Bank of India because it provide me a platform to uh, explore my knowledge in explore my knowledge. And currently, sorry, sir, यहाँ से start करते. Currently, I am recruited in RRB. That is only limited to that place only, Jammu place only. But in Central Bank of India, give me opportunity to explore my knowledge. Along with it, give me opportunity to join my family, to join in my family city, Mm, so that I can improve myself in a career mm, also. And I have no issue and also pay scale is same. mm, mm. So I do not any worry regarding to leave this organization. No, no, don't This is tell. not the correct answer. No, not correct answer. You are telling Yes, I don't have any worry to I leave it. write down this point which you have telling me. I have to write down, sir. You have to make it out in a proper form. And Yes, that sir. is Yes. number one reason, let me tell you, is that one, Limit. this is only within Jammu, whereas the next one is posting anywhere in North India and also South India. I am interested in North India posting, like say Delhi or Rajasthan. So I would like to come here. Number two, here is an excellent opportunity for career growth, because the place where I am working, there are not much career prospects. Like I am working in GST or whatever it is, so उधर में उतना opportunities नहीं है, इसीलिए हम दूसरी जगह पर आना चाहते हैं. Okay. Okay, sir. Correct? Yes, sir.
Now, that's a good question. Next is, please tell us about your present portfolio. In JKGB, sir. No, yeah. अभी जो काम करते हैं उसका बारे में बताइए. Recently, I joined Jammu Kashmir Gramin Bank from 14 March 2022. There, I have worked in a accounts department in accounts department GST analyst post, where I have filed GST returns like GST R1 return, which is going on every month of 10th, GST TDS return, and GST 3B, which is gone on 20 month of next month. इस ऑनलाइन रिपोर्ट प्रिपेयर करना, ब्रांचेस को मेल डालना, उनसे डेटा मंगवाना और एक्सेल शीट प्रिपेयर करके सीए को सेंड आउट करना. इस अभी मैंने ये 3 रिपोर्ट रिटर्न प्रिपेयर करी है. Good, very good, very good. Now I am using you for knowing more about GST and banking. इसका बारे में कुछ बताइए. For which services of bank GST is applicable? What is the percentage? It is 18% or what it is? No. So GST is applicable which bank is providing services to its customer, like ATM charges which he collect from his customer, loan processing charging, miscellaneous income जो बैंक को अर्न करता है, like लोन प्रोसेसिंग चार्जिंग से, चेक से, डुप्लीकेट चेक बुक इश्यू करने से प्रोसेसिंग, लोकल रेंट चार्जेस जो बैंक को मिसलेनियस इनकम होती है, उसके ऊपर बैंक है कि what is the rate of GST? Rate of GST, that is 18% normally. Everything 18? Yes, sir. That is, I think interest is also charged, na? Interest is also subject to GST, correct? Bank interest. Hello? Yes, sir. I think the bank is earning interest from advances. Yes, sir. Yes, sir. Interest income से भी बैंक को GST देना पड़ता है, सर. हाँ, ये तो कॉन्फिडेंटली आपने बोला नहीं. बोलिए. बट अदर इनकम जो है, अटल पेंशन योजना से जो कमीशन आता है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है, और बैंक ने अदर इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप कर जो इनकम आती है वो एग्जाम्प्ट होती है, सर. अच्छा, and the rate of GST is same in all? Yes, sir. 18%. Good. 18% they have to pay. Yes, sir. Yeah. So, but bank claim 50% input in GST 3B. That means what? What is that? It means if bank purchase an asset, suppose 1 lakh, then he had paid for 18%, 18,000. उसके पर जीएसटी पेड किया तो 50% वो कॉस्ट जनरेट करेगा, 1,09,000 के, और 9,000 रुपए को वो सीजीएसटी एडजस्ट में एलोकेट करता है. तो वो जो इनपुट क्लेम करेगा वो 9,000 ही करता है. 50% जितना टैक्स पे किया उतना ही वो एलिजिबल है क्लेम करने के लिए. Because I don't know much about it, let me tell you. See, we people are buying demand draft over which we have to pay GST. डिमांड ड्राफ्ट लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, ये सब उसके ऊपर जो बैंक को जो इनकम चार्ज होता है उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ता है, सर. करेक्ट. that will be remitted by you to government, correct? Yes, sir. Yes, sir. And through return filing. You were telling about 18 lakhs, 9 lakhs. ये पता नहीं वो क्या है? Sorry, sir. 18 lakhs, 9 lakhs. You know, you were telling about 18,000. Suppose वही है, बैंक has purchased 1 लाख रुपए का कोई एसेट परचेज किया बैंक ने, और जीएसटी उसके ऊपर सामने वाला वेंडर 18% काट के दे रहा है, 18,000 रुपए. Then bank is not eligible for completely taking input 18,000. Bank is claim only for 50% claim of GST which he had paid. Like 18,000 का 9,000 तो वो क्या करेगा, एक्सपेंस में बुक करेगा. 1 लाख प्लस में 9,000 एसेट हो जाएगा, और जो 9,000 है उसको फिर 50-50 में बाइफरकेट करता है. 4500 सीजीएसटी ऐसे वो बुक करता है बैंक. So बैंक इज एलिजिबल ओनली. That means this 4,500 is eligible for bank taking input credit. इनपुट क्रेडिट का मतलब जीएसटी जितना जमा देना उससे कम कर सकते हैं, करेक्ट? यस. मतलब जितना देना है उससे सेटअप करवा सकते हैं हम लोग. सुपर. This point was not clearly known to me, that is why I wanted you to tell me. Very good. Do bank checks have GST?
Sorry sir, bank. बैंक चेक्स इश्यूज, चेक इश्यूड, उसका ऊपर में जीएसटी होता है? I do not know sir. As a rule of thumb, there is no GST on bank fees and interest, as they are Okay. financial supplies, input taxed supplies. There is a GST on credit card, merchant fees, etc. Is there a GST on accounting services? Yes sir, which he have paid to his auditors, Hmm? CA, chartered accountant. No, no. Here it is given the GST Act 2 makes it clear any services bracket including accounting services acquired by a SMSF in relation to making financial input tax supplies would not be for a creditable purpose. So in general, accounting services are not claimable. Accounting services are not claimable. Do bank overdrawn fees have GST? GST is not payable on a dishonored check fee. अच्छा, ये सब मालूम होना भी थोड़ा जरूरी है. हाँ. They can ask you whether which areas your GST is applicable, GST is not applicable, and all that. Okay sir, I will Thoda, read out. I am getting all these questions when I go to Google and search bank Okay. services and GST. Okay sir. You will Bank get, services and yeah, उसमें से देख लीजिए, उसका पूरा prepare हो जाइए, ठीक है? okay Because sir, okay. there will be 2 or 3 questions relating to your present work, and in the present work, in order to confuse you like me, they will ask 1 or 2 questions, and you should not get fumbling in that. Okay sir. Good, clear हो गया. Now you want to come to finance. Yes sir. Good, welcome to finance. Thank you sir. So what is the entry level financial analyst job will be doing? Financial entry level junior financial analysis collect करता है. First of all he collect data from his raw report, जो कि वो extract करता है report को from software से. No. Correct. और फिर वो उस रिपोर्ट से एनालिसिस करता है, उस रिपोर्ट से वो कंक्लूजन ड्रॉ करता है, एंड देन अपने सीनियर को प्रेजेंट करता है कि व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस डेटा इंफॉर्मेशंस. Very good. What are the skills required for financial analyst skill and which you also possess? Okay sir, as a financial analyst should have a great knowledge about related software that he is using in his banking services. Also he should have analytical skills so that he can analyze different report, like different report, and also he should have a good command in Excel, MS PowerPoint, through which he can draw conclusion through report, through pie chart, table. Also he should have communication and presentation skill to his senior. As well, good command in accountancy and taxation matters also, so that he can drive a decision in what portfolio he should invest. All these things should have. इसका अलावा you should have a good presentation skills. Yes sir. Ability to influence and persuade. Strategic thinking. हमको पता है. Yes sir. पता नहीं what is strategic thinking. कुछ पता होता है आपका? Strategic thinking मतलब पास्ट में कंपनी का क्या ट्रेंड चल रहा था, पास्ट में कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, और फ्यूचर में कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी, मार्केट के सिनेरियो को रीड करना, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उससे रेगुलरली अपडेटेड होना, और उससे कंपनी की फोरकास्टिंग करना, और देन वो एक्चुअल में जो डिसीजन आया है तो उसे कोरिलेट करके रिपोर्ट फाइंड आउट करना और वो अपने सीनियर को बताना. दैट इज अ एनालिसिस प्रोसेस. गुड, दिस वन यू टोल्ड करेक्टली. इसमें और कुछ बोला है, ERP सिस्टम बोलता है, वो क्या है? Enterprise resource planning ना क्या? Yes, it is a software that is used for accounting purpose. In it we entered vouching, put an entry level. Are you familiar with that or not? Yes sir, yes sir. In office time in CA during articleship I did work in
ERP. This software, yes, sir. Very good, very good, very good. Yeah. Here it is stated, you must be familiar with glossaries. Glossaries का मतलब relating to financial analysis, correct? Okay, sir. उसका बारे में आपको कुछ पढ़ा है आप? Glossary relating to financial analysis. ऐसा कुछ आएगा? What are the key terms used in financial analysis? What is MTQ? MTD. MTD, QTD, YTD. TD means what? Hello, excuse me. Yes, sir. This one I got by searching in Google. Glossary Okay. relating to financial analyst. Okay, sir. इसमें Grocery. I am getting MTD, QTD, Y. I know year, quarter, month. TD का मतलब क्या है? Because glossary पता होना जरूरी है ना. 1 minute. Yes, sir. MTD. Is MTD? Maturity to yield. Maturity. No. नहीं आता है. Yield to maturity था. YTM था. Yield to maturity. ओहो. ये MTD. maturity. MTD. Hello, excuse me. Yes, sir. I'm just giving you in your WhatsApp. Are you in WhatsApp? Yes, sir. Yes, sir. Please send message, sir. अच्छा, अभी दे दिया. अभी इसमें दिया है. इसको क्या है पता दीजिए हमको. What is this? I do not recall, sir. all these terms आप हमको बताना है. You must be able to explain. I do not know all this term, but I know YTM, but I do not know what is white. अच्छा, इसको बाद में prepare कर दीजिए. Okay, sir. Okay. Tell me what is plan, what is budget, what is forecast, what is LE का मतलब क्या है? What is budget? आधा वो सब को बोल सकते हैं. What is LE? LE. हाँ, आप देखिए हमने स्क्रीन में दिया है. अच्छा, 1 minute. 1 minute. Hold on. My son is calling. Hold on. Okay, sir. Okay. Hello. Hello. மணி சொல்லுங்க வந்துட்டேடா. அரிப்பிரியா குளிச்சிட்டு இருக்கா. ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு கூப்பிட சொல்லு. 10 நிமிஷம் கழிச்சு சொல்லு. Hello. Yes, sir. Yeah. Now in all this MTD, QTD आप find out कर दीजिए. Then Okay, sir. LE also, you know that? No, sir. LE, I think lean experience. I do not know, sir. What is अच्छा. LE? LE relating to financial but analyst post. Okay. These things, what you told is last year on year versus LY का मतलब last row में देखिए. हाँ sir. Why year on year versus LY last year? Year on year versus last year, correct? Versus budget, correct? Budgeted. That is correct. Yes, sir. Variance, okay. Favorable, unfavorable variance, okay. Gross profit, Yes, net profit, EBIT, EBITDA, plan, budget, forecast, LE. Now talk to me about EBITDA and also Okay. forecast. Tell me what is it? बताइए. Okay. Firstly, I am telling about what is EBITD. EBITDA. EBITDA is stand for earning before interest, taxation, depreciation and amortization. कि कंपनी का
इस ये रिप्रेजेंट करता है कंपनी का प्रॉफिट कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्सेशन एंड अमोर्टाइजेशन से पहले कंपनी की पोजीशन क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस चार्ज करने से पहले कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, दैट इज रिलेटेड टू EBITDA. Good, good. And EBITDA, next operating profit, earnings before interest, tax, depreciation, and depreciation and amortization. amortization. Good. Yes, sir. Excellent. So next question, what did I ask? Forecast. What is forecast? Forecast, बताइए. Forecast, we can say that जो कंपनी कहते हैं कि मेरा आज सपोज कीजिए कंपनी की टर्नओवर 100 करोड़ है, आगे आने वाले समय में जैसे कंपनी फोरकास्ट करते हैं कि मेरा नेक्स्ट ईयर 20% ग्रोथ करेगा, फिर 25%, फिर 27%, फिर ऐसे 29%, 28%, जो फोरकास्टिंग करती है कंपनी अपना टर्नओवर का, दैट इज नोन एज ए फोरकास्ट, कि आगे 5 सालों में कंपनी कितना ग्रोथ करती है, तो एक परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं कि इतना परसेंट हमको ग्रोथ करना ही है, दैट इज अ फोरकास्टिंग, आई थिंक. हाउ डू यू see yourself in 10 years from now? I would be part. This is how, I would be part of a decision-making committee. I think if give me opportunity to serve in this organization, then I will find myself in 10 years. You can I even would be say, part of a managing decision committee part, so that I can you can say my that opinion, my decision. Yeah, I'll be an AGM. I will be in AGM so that I can uh, perform in board meetings. Board meeting में नहीं होगा AGM को. AGM only chairman, executive director, then GMs. Some GMs may be called, very rarely. Okay. No AGMs. AGMs will not be called. Because you know how many scales are there in bank? Officer scale, you know? I think in GKJB में भी तो सर 6th scale है, 5th scale है, but in other bank it may be 6th scale. 7. 6th या 7th scale. 7 scales. Scale 1 assistant manager, scale 2 manager, scale 3 senior manager, scale 4 chief manager, scale 5 assistant general manager, AGM, scale 6 DGM, deputy general manager, scale 7 general manager, after that ED, executive director. Yeah, that is appointed by government. Okay, sir. It's not coming under scale. Good. That is okay. What is that variance? Variance का मतलब क्या है? Variance is a difference between what is standard and what is actual. What should we have, what should be done, that is standard, and what he had actually incurred, that is actual. Then difference of between is known as a variance. Or in other words, forecast से difference क्या है? Forecast क्या किया है? वो कैसे हुआ है? ये दोनों का difference, correct? Forecast तो है कि हम No, I forecast my company to grow at 20%, but the company has grown by 25%. The variance is 5% increase, correct? It's favorable. Yes, the variance is favorable. Very good. What KPI is most important for measuring profitability of a company? Sorry, sir. What? KPI. I'm giving KPI. Key performance indicator. Yeah. Okay, sir. Yeah. First of all, we have to see company balance sheet, which represent what is company का gross margin क्या है. Then we have to see operating profit ratio. कंपनी का operating profit कितना है, कंपनी कितना अपने operating gross profit में से अपना operating जो expense घटाने के बाद कंपनी कितने margin पर operate करने लग रही है, हम operating margin ratio भी देखेंगे. Then after हम देखेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, और देन आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन. ये सभी चीजें है जो कंपनी को दिखाते कंपनी का एट स्टेज बाय स्टेज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैसे हो रही है पिछले 5 साल के या 10 इयर्स के. हम लोग उसके स्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट देखते हैं तो हमको पता लगता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है. ये सभी रेशियो देखने से हमको पता चल जाता है, मतलब क्योंकि मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट देखी ना, उसमें पूरे 5 साल के क्या रेशियोज थे, सारे अलग अलग EBIT रेशियो, PBT रेशियो, पैट रेशियो,
ग्रोस मार्जिन रेशियो तो इंडिकेट करता है कंपनी कहाँ कहाँ पे ज्यादा मार्जिन कमाती है, कहाँ पे कम कमाती है, किस पोजीशन तक कंपनी अपने आप को मार्जिन तक रखती है। गुड। इसमें दिया है आंसर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू दिया, इज इट दैट इज करेक्ट? जीपी रेशियो। यस सर, No, दैट इज जीपी रेशियो। जीपी रेशियो। दिस क्वेश्चन के लिए ये आंसर दिया है, व्हाट केपीआई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, एज यू से जीपी रेशियो, Yes, gross sir. profit divided by revenue. Good. Net revenue. What is the key ratio while evaluating a new investment? Excuse me. Yes, sir. It's a good question. Yes, sir. हमने कैसे गूगल में स्विम करके ये सब क्वेश्चन लेकर रखा है फॉर मोनिका सेक। Yes, sir. Very nice question. Very nice. या तभी तो हम आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करता है सर। What is the key ratio while evaluating a new investment? Net return by investment. That's what the answer is given as. Net return divided by investment. Okay. Net return divided by investment. Okay, Investment. doesn't matter. Where do you see dividends in the income statement? Yes, sir. After profitable, after टैक्स डिवाइड होने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके बाद शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जाता है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से ही दिया जाता है सर। No, question you are not understood. हमने क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, डिविडेंड्स को इनकम स्टेट में कहां पर देखेंगे? The answer is we do not see dividends in income statement because dividends are not expenses. They are distribution of profits. Yes, sir. ये तो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है. That is, it is not shown in expenses. It is shown as a distribution of profits. It is a part of a profit. Yeah, good. Next question. This also more technical. If accounts receivable has been rising, what could be the driver be? Some of these terms, you know, they are all English terms, American or English terms. So, Yes, see, we never use a driver and all that. Here the question is, if accounts receivable has been rising, what is the reason for that? Account receivable has been rising. It means debtors, जो आवर डेटर्स है, जो कंपनी को पेमेंट जिस पार्टी से रिसीव होनी है वो अभी पेमेंट नहीं करने लग रहे हैं सर। कंपनी को जिस पार्टी से पैसा रिसीव होना है, द पार्टी दैट हैज कंपनी हैड टू कंपनी वांट फंड इज नॉट गिविंग फंड टू द कंपनी। So it's और या फिर वो डिले कर रहे हैं पेमेंट करने से, दैट्स व्हाई कंपनी का डेटर टर्नओवर रेशियो इंक्रीज हो रहा है। करेक्ट। इन अदर वर्ड्स थोड़ा क्लियरली बोल सकते हैं, कलेक्शन प्रॉब्लम। यस, कलेक्शन प्रॉब्लम, और कंपनी की पॉलिसी हो सकती है थोड़ी सी, उनसे कलेक्ट करने का पैसा थोड़ा 30 डेज की जगह 45 डेज है, तो मोर डेटर्स क्रिएट हो रहे हैं। हो सकता है देयर इज प्रेशर इन द मार्केट that people are not willing to buy at a lesser credit period. They want longer credit period. और lesser credit period agree करने से भी वो लोग देते नहीं है। और increased sales, it can be because sales increase हो गया, इसी वजह से हमारा debtors बढ़ रहे हैं। और the another reason is receivables का they are becoming old and older. They are becoming older. Yes. Same reason. Net reason also is included that COVID may be also be reason because आगे से पार्टी से पेमेंट नहीं आते तो वो भी नहीं करते पेमेंट। Yeah. अच्छा, this is the question we were discussing about NPA. There we were talking about NPA. Yes, and there this question is very good. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You have answered these questions. Do you think working late is a good thing or a bad thing? No. I cannot say कि always doing
always doing late working is good for organization as well as employee, because sometimes we have to do work for complete our deadline or complete our projects. It is good for organization as well as employee, but every time if a employee does uh, delay work, then it represent that he's not punctual, he's not disciplined with his work. Then always doing work is not, we can say it is good for organization. Yeah, true, but थोड़ा थोड़ा इधर में थोड़ा आर्टिफिशियल आंसर दे दीजिए ना. Without agreeing to that, you say, I won't mind sitting late for doing things. Okay. Yes, sir. While normally I try to complete the work on time. On time. 1 minute. Hold on. Okay, sir. Haripriya. Money phone. So, yeah, normally I complete the work on time, but where there is need, I will sit. Something like that. Thoda positively bata dijiye. I know it will affect the work-life balance and all that. ये सब theoretically बोल सकते हैं. Practically उधर जाने से तो काम होने से तो काम करना ही पड़ेगा. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. What was your experience for year ending? Year ending में क्या problem था? Was your people sitting late or not? Yes, sir. Sitting late. I left the 31st मार्च को 8:30 8:45 के अराउंड मैंने, मतलब ऑफिस हम लोग सभी 8:45 के अराउंड ही गए थे सर. और सर थे वो और भी लेट गए थे सर. गर्ल्स पहले चली गई थी 8:45 के आसपास, और जो बॉयज थे और सर थे वो बैठे रहे थे, क्योंकि उनको रात को आई थिंक एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो रन करना पड़ता है कि सारा बैलेंस उनको क्लियर करना पड़ता है, तो वो रात के 2 या 2:30 बजे तक भी बैठे थे सर. Correct. So ऐसा कुछ था. that is a thing. Yes, Now, sir. I don't know what is the answer you will give for this. As a financial analyst, how would you approach risk? What is the answer for this? I don't know. How would you approach risk? अच्छा, risk analysis and risk management, उसका बारे में थोड़ा मता होने से ठीक हो जाएगा. So what is the answer you will give for this? Risk management. No. Here the question is, as a financial analyst, how would you approach risk? You have to, what is your answer? I will tell you my answer. Okay. Risk in others, risk like we can say, जैसे हम इन्वेस्टमेंट में, जैसे सर मैं हिंदी में बोल रही हूँ कि जैसे मैं इन्वेस्ट, जैसे मेरा फाइनेंशियल एनालिसिस्ट है और मैं मार्केट में देखती हूँ कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए और मेरे को मार्केट में इन्वेस्ट करना है पैसे को, तो किस तरीके से मेरे को पैसा इन्वेस्ट करूँ. अगर मैं एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करती हूँ, लाइक जैसे इक्विटी में इन्वेस्ट किया, किसी ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी परचेज किया है, वो एक जगह परचेज करना वो ज्यादा रिस्क है एज कम्पेयर टू अगर मैं डिफरेंट पोर्टफोलियो में करूँ. जैसे मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कर सकती हूँ कुछ परसेंटेज, कुछ मैं डेट में कर सकती हूँ, कुछ के कॉर्पोरेट बॉन्ड ले सकती हूँ, कुछ थोड़ा इक्विटी में मैं रख सकती हूँ. तो इस तरीके से जो मेरा एक जो रिस्क है एक पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक परचेज करने से, वो मैं अपना मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सकती हूँ बाय डिफरेंट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके. दैट इज अ मैनेजमेंट ऑफ रिस्क. Correct. I will give answer in your explanation. Not Yeah. Here I know. I think you can manage this question. You can manage this. No. I was having in my mind. I will see risk question. कैसे पूछ रहे हैं? क्यों पूछ रहे हैं? Are we a person who will not take risk as myself? हमारा में पे हम तो रिस्क लेते ही नहीं है, क्योंकि हम तो बुड्ढा है, इसलिए रिस्क लेते नहीं है. So are you a person of that type or are you a person? अच्छा जी, हम और एक लिंक दे रहा हूँ जहां से आपको बहुत क्वेश्चंस मिल रहा है. Okay sir, please send me. अभी दे दिया. आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिए बाद में. So I will tell that I will take a calculated risk. मतलब I will not go by blind risk, but I will not take too much cautious also. हम search करेगा, find out करेगा whether it is worth taking some risk. So I will take a risk, even if it is 50%, 60% success oriented. I will take my efforts for that. You are such a person.
By sitting in Jammu, you are trying for a job in Mumbai, and and not giving it up. So you are a person who will take reasonable risk or credit risk. Good. Now, next question. Good. Explain the situation you were in when you had to manage a lot of tasks and projects concurrently. Okay. It's a very general question, but this type of questions we can expect. Okay. Tell me. सर इसके अंदर मैं ऐसे बोल सकती कि अगर मेरे को एक साथ बहुत सारे काम दिए जा रहे हैं तो फिर मैं मेरे जो नीचे एक पर्सन है जो मेरे को लगता है कि ये हाँ ही इज वेल सफिशिएंट टू डू हेल्प मी, तो मैं उसको दूसरे काम में एज अ रिप्रेजेंटेशन करती हूँ कि मेरे एब्सेंस में वो काम इसको देखेगा, जो अदर टीम मेंबर से काम करवाता है, फिर वो मुझसे कांटेक्ट करेगा और फिर मैं उसको बताऊंगी कि ऐसे काम करना है इन वाइल इसके बीच में जो मैं दूसरा काम कर रही हूँ वो भी साथ साथ कर सकती हूँ, इससे मेरे दोनों काम डिस्टर्ब नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि मैं मेरा जो एक सीनियर है, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट है उसके नीचे एक सीनियर उसका जो जूनियर होता है वो जरूर होता है, तो वो काम उसको हैंड ओवर करके और उस काम को उसमें लग जाएंगे। जैसे अभी हमारे बैंक में अब ऑडिट हो रही है सभी, तो हमारे सर डिपार्टमेंट में एचओडी और एक नीचे एक पर्सन हो रहा है, तो वो क्या करते हैं कि सभी ऑडिटर्स को देखना, क्योंकि अलग अलग बैंक में सभी ऑडिटर्स आए हुए हैं ऑडिट करने के लिए, तो वो उनको एक ऑडिटर्स को एक कमरे में बिठा के वो उनको देखते हैं और दूसरे जो डिपार्टमेंट में सर उनको देखते हैं। अगर कोई उनके बीच में होता है तो वो उनसे डिस्कस करते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो दोनों काम दोनों मतलब जो 3-4 जो ऑडिटर एक कमरे में जो 3 ऑडिटर बैठे, दूसरे में जो 3 ऑडिटर बैठे, तो ऐसे काम कंकरेंटली भी चल रहा है और वो मैनेज भी कर रहे हैं अच्छे से। दैट इज अ लाइव एग्जांपल दैट I've seen in my banking. Good. See, actually, Nowadays. they want to know whether you are using the concept of delegation. Yes, concept of delegation. Yes, sir. Delegation करते हैं, and or are you trying to do it yourself? ये देखना है, and so that your involvement will be to a level that you can manage. हर काम को आपका दिमाग का ऊपर में डालने से तो काम नहीं होगा। काम नहीं होगा। यस सर। अभी देखिए, मेरे को वरीज होना है that I should make you succeed. इसका ज्यादा हमने मेरा हेड में डाल के अरे भाई ये लड़की तो पूरा पढ़ा नहीं करने से कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। यस सर, यस सर। Just joking. Because you talk very nicely. I am taking liberty and telling you. What have you had to alter or adopt your approach to the task in order to get things done? Okay. What have you had to alter or adapt your approach to the task in order to get things done? That is, this question is asked to find out, are you flexible? Okay, sir. So, सोच लीजिए, you can answer on this. I will give you all these questions in your WhatsApp. Okay, sir. Okay. इसका बाद में आप prepare कर दीजिए, so that you can be ready. In fact, it is like open exam, I am giving you questions. You have to answer them. समझ गया? Yes, sir. Yeah, good. Now, let me go to another area. I will ask something else. Acha, now tell me about what have you seen in the bank balance sheet of our Central Bank of India? Okay. It's a big question. Big question. Did you prepare for the, Did you prepare for this or not? Yes, sir. I go through the balance sheet of Central Bank of India. Yeah. And I notice some figures around its profitability and balance sheet position also. That its business. No, what is the present position of Central Bank? Last year, did they make a profit 2021? No. It's right now it is in loss. So in 2021, it is in loss 888. मतलब arts 888 crore. It is loss. It is in loss. Net profit is in loss, and its return on investment is minus 0.26%. Oh, really?
Acha. Yes, sir. But if we see balance sheet of 2020, that it has profit, it has lost 1181. But अभी थोड़ा कम हो गया. yes, sir. Yes, sir. It is in profit, but this profit cover up this last year losses. That it comes in negative profit or decreased profit. Okay. Decrease But profit. yes, but इस जो बिजनेस है इसका, जिसने प्रॉफिट कमाया बिजनेस जो स्केल है, वो है 4,06,000 करोड़ का इसका बिजनेस है सर. और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी 27,000 के नहीं, ग्रोस जो प्रॉफिट है इसका वो 27,000 के अराउंड है, 27,000 के अराउंड है. बट जो ऑल ओवर जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन देखते हैं तो इसका लॉस है 888 करोड़ का, और ये माइनस में है इसकी रिटर्न इन्वेस्टमेंट के ऊपर 0.26%, एज वेल एज इसकी जो बेसल्स नॉर्म के अकॉर्डिंग जो टीयर 1 टीयर 2 जो रेशियो है वो भी इसकी बेसल 2 के अंदर जो इसका 14% है 14.27, और बेसल थर्ड के अंदर है इसका 14.86% जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है सर. Good. Acha, your interview is on 29th. 28 sir, 9 p.m. 9 a.m. 9 a.m. in Delhi, in person. Acha, it may not be in person. I think it will be through internet. Virtual meeting, yes sir. Virtual meeting. Very good, very good, very good. No problem. Koi taklif nahi. Yeah. So these questions and all you are able to manage very well. About Yes sir. central bank, you can manage. What is the total deposit of central bank? 1,75,000. Only? 1,75,000. 1,75,000 lakh crore sir. 1,75,000 lakh crore. crore. Acha. Yes sir, yes sir. What is the total banking system deposit? Total banking. I have given you materials you have not prepared. Okay sir. No, just joking. Abhi, no, because it is there in my CTDI magazine. Okay. आपको लिंक दिया ना CTDI? Yes sir, yes sir. उसमें last page, last para, the total scheduled commercial bank total deposits note करो जी. कागज ले लो. Okay. 168. Okay. Okay sir. 99. 16899. 606.65 crore. Okay, I will. Can you tell me what it is? 1, 10, 100, 1000, 10,000, லட்சம் 10 லட்சம் கோடி. Tell me. आपने लिखा है? 168,199.06. No. 16899. 99, yes. 99606. crore. Total deposit of scheduled bank, public sector bank. Scheduled commercial bank का एक मिनट ठहरो. अभी दे दिया आपको व्हाट्सएप में दे दिया. देखिए कैसे आता है. हाँ, ये दिख रहा है सर. 168,99606.65 लास्ट ईयर आपने सेंड किया था सर. I can see here. या टोटल क्रेडिट कितना है? 120,15974.16. करेक्ट. स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 3.75. Correct. What is the fixed rate, reverse repo rate? FRR. 3.35. Yes sir. Good. 3.35. Very good. What is the SLR? It's SLR same as usual, 18%. What is CRR? 4%. Yeah. What is forex reserves? 47,07,396. नहीं. crore. No. कहाँ से बोल रहे हैं आप? Forex reserves is 6,17,648 Yes, sir. It million. is US dollar. US Yes. dollar.
US Yes, dollar. sir. I am और telling in rupee. you can say 617 billion बोल सकते हैं. Okay. BILLION. Yes, sir. समझ गया? Yes, अच्छा sir. अच्छा, फॉरेक्स रिजर्व रुपीस में दिया है Yes, sir. 4707. गुड, ये यू बोल आर रही थी मैं. वेरी गुड, यू आर राइट. गुड, दैट्स ओके. गुड, that is right. Now let me ask you some more questions. What is the time now there? 10 o'clock. 9:51. Right, it's okay. What about dinner? बाद में खाना है? No, no, sir. Already खा लिया? done. Oh, very good. Yes, I'm That free. I know. That's good. That's good. You know, very good. Now some more questions. How would the income statement change if a company's debt increased? अगर कंपनी बाहर से पैसा रेज करती है थ्रू डेट, इट मींस कंपनी को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा इसके डेट के ऊपर, तो कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो रिड्यूस होगा. Good. Because बट debt अनदर पॉइंट, तो without पैसा नहीं आएगा, यस without यस interest नहीं आएगा, विदाउट इसलिए हम इंटरेस्ट लोग होता है. इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यस इसलिए सर. हमको कम नष्ट हो जाएगा. यस सर. Good question. But बढ़िया. another point can be say that in financial terminology कि it can also save tax benefit also, because अगर हमारा प्रॉफिट कम होगा तो हमको टैक्स सेविंग भी होगा उसके ऊपर 30% का. Mhm. Another Yeah, financial analyst point of view. अच्छा, very good. Good. If you know that, fine. What happens to a company's cash flow when there is an increase in accounts receivable? Account receivable is increasing, that it means we have not collect our payment from our party. Hmm. And it get delayed due to many reasons, like policy company, the debtor is not willing to pay early stage, they want delay its payment. First point. Another one is can be seen that they have no payment there to do payment to company. Hmm. So it hurdle for company in day-to-day working capital also. Good. So It will soon run out of money. यहाँ पर दिया है, no money. when there is an increase in accounts receivable means there is an increase in the decrease in cash flow, net worth and value of company assets. In other words, if it continues the increase, a company will run out of money. Yes sir. Yes sir. Good. Have you ever encountered inconsistencies in a company's finances? How did you address this situation? For you, this question, will it be relevant? Because you are not worked in individual companies and all that. Yes sir. Anyhow, I don't know how you will manage. Oh, it is there in that link I have given you. Prepare कर दीजिए. बाद में अगले बार जब in case we meet before you are going for interview once again, I will ask some other questions and try to confuse you. Okay sir. Sure. No, but I am very happy you are not affected by difficult questions. You are trying to answer them in a way that is suitable, and you are the way you are understanding. But I think Yes, you mistakes wise, I think you would have done only 2 or 3 mistakes, not many. I think I telling my answer in a explanation way, I think that is not a proper way telling. You have to tell it briefly. Yes, I need to tell it in brief manner, concise manner. That for that I have to prepare, sir. To mentally prepare करके अब बताना है. For example, I will give you, tell about your daddy. बताइए. Sorry, sir. 10. Tell about your daddy. Daddy, my father is having a shop of tailor. My father having a shop of tailoring. Correct. अभी इतना brief कर दिया. थोड़ा बोलना है ना. My father is a tailor. I like this quality of him. Okay. Something like that. कुछ Okay. ना कुछ बताने से तो अच्छा होगा.
Good. He's tailor and in my shop there is a 7 to 8% work in it. ऐसे थोड़ी बोलना है. Correct. It depends बोलना on है. it's some more you can tell like, but you don't have to tell my shop is in the first floor. It is No, having no, no, only no. 3 rooms. ऐसा तो It बोलना is चाहिए. मतलब इस मेरी शॉप में मतलब लेडीज रिलेटेड काम जो सारे होते हैं, लहंगे के, शादी के जो होते Oh, हैं, नॉर्मल जो मतलब no, लेडी no. सूट होते हैं, ब्लाउज होते हैं, जो Hmm. डिफरेंट काइंड के जो ब्लाउज की जो होते हैं डिजाइनर, वो सब बनते हैं. दैट्स अच्छा, लाइक. डिजाइनर ब्लाउज एंड ऑल वेरी कॉस्टली ना, 1000 रुपया में लगेगा. बट अब सब कोरोना से सब डाउन हो गया है सर. Really ये भी down. है Oh, थोड़ा oh, सा, बिजनेस थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है कोरोना से. oh, sorry. कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर डिक्रीज हो गया है, बट Oh, ऑल ओवर इज ओके. oh, good. Anyhow, I wish you best of luck, and थैंक यू I सर. enjoy talking to you. I also enjoy I talking to I you, really sir. enjoyed communicating because the way you came forward for the previous session and participated well in that session also. This Yes, is sir. this shows that you are willing to improve yourself. Good. Yes, sir. Kuch, any questions you have now? 28 is interview. Abhi 24 ho gaya. Which Yes, date you are leaving for Delhi? 27th? yes, sir. 27 को मैं सुबह. 27 is not so far, sir. It is on to Wednesday. 2 days only. Acha, 2 acha. days only. Yes, So sir. yeah. So agle meeting will be after you are attending the interview. Please tell me the questions they are asking you. Correct? Okay. Yes, sir. Why not? Why not? Yeah. You can kindly send the questions they are asking. They will ask some mostly HR questions and about 30% relating to your chartered accountant and this EBI, TDA, DADA and all that. इसका Okay, sir. बाद में 10% will be on something related to current affairs. Okay, sir. That's what it is. Current news थोड़ा पढ़ लीजिए. At least from today कागज पढ़ लो. Okay. Good. They can just ask since you are from Jammu. अरे जम्मू में अभी कैसे है? थोड़ा टेररिज्म ज्यादा होता है, कम होता है? Some such. जम्मू में आज तो सर पीएम सर आए थे. some- 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डाला है जम्मू में पीएम सर ने. अच्छा, good. Very good. Very good. स्कीम्स लॉन्च करी है कि दोबारा से जम्मू को अच्छा बनाएंगे 370 सेक्शन हटाने के बाद. Good. I know. I don't know. Because a lot of see there is one fight. Acha. They can ask you also. Did you see that Kashmir File movie? No, sir. Because You know what it is? yes, sir, it is a movie on Kashmir पंडित कि जो उनको पहले यहाँ से जो भगा दिया गया था उनके होम टाउन से ही, जो मुस्लिम लोग थे ना, इनको मतलब इन्होंने अत्याचार कुछ किया था शायद पाकिस्तानी ने, तो इनको हटा दिया गया था. आई हैव टू आई थिंक रीड ऑन इट, है ना, व्हाट इज द मेन या प्रोपेगेंडा. थोड़ा रिव्यू में जाके पढ़ लीजिए. Yes, sir, because I am living here alone though, so that's why I am not go anywhere. No, My but husband is there, then फिर मैं गई नहीं sir. yeah. But अकेला. if he can spare that video link for you, you can see that also. Yes, yes, yes. Thank you, sir. ये तो जरूरी था, because वो पूछ सकते हैं ऐसा भी. They will Kashmir ask. file. They will ask questions. Who is the hero of Kashmir File? Who is the heroine of Kashmir File movie? Who is the director of Kashmir File movie? What पल्लवी is, जोशी थी एक. I don't know. I don't know. What is the reason on account of which this has become very famous? Why have you not seen it so far? Because I am alone here. और I know. अकेली मैं गई नहीं sir, At इसलिए this मैं नहीं stage, गई. you can't be seeing such movies which discourages you. I have not seen it. My daughter and son-in-law, they went and saw in the theater, but we have not seen it in the house. It's not. थोड़ा discouraging movies देखने से तो और भी discourage हो जाता है life. जिंदगी में, that's what it is. Anyhow, I enjoy talking to you, Monica. I wish you success. Thank you, sir. Sir, I want to ask some questions regarding what they ask in panel. Okay. सर पहले तो ना मेरे को ये पहले भी था कि मैं इसका आंसर कैसे उनको बताऊं कि मेरी क्या मतलब वीकनेस रही है, मतलब व्हाट यू हैव स्ट्रेंथ वीकनेस. स्ट्रेंथ तो आई हैव प्रिपेयर, बट वीकनेस मेरे को थोड़ा बोलना नहीं आता है.
वीकनेस आपने क्या लिखा है, पढ़ लीजिए। वीकनेस में मैंने ना एक ये लिखा है कि आई एम टू डिटेल ओरिएंटेड, कि कोई भी अगर मैं काम करती हूँ तो उसका पहले मैं स्ट्रेटजी बनाती हूँ कि ऐसे ऐसे गो थ्रू करना है, बट जो माय कलीग है, फ्रेंड्स है, साथ में काम करने वाले, दे डि नॉट कोप अप विद मी इन हम्म, दैट, तो हाउ आई इम्प्रूव इट। फिर मैंने लिखा कि मैंने ब्रीफ में लिखना शुरू करा, फिर वो सामने से काउंटर क्वेश्चन आता है कि आप ब्रीफ में, आप अपने लिए ब्रीफ में क्यों लिखना शुरू करा, क्योंकि आपका तो जो लिखने का है वो थोड़ा सा ज्यादा है। ब्रीफ में लिखोगे तो आप उनकी सुविधा के अकॉर्डिंग थोड़ा अपना आंसर चेंज करोगे, आप तो अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग काम करोगे ना। तो ये मेरे को थोड़ा सा, मेरे को खुद को ही ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन लगता है सर। तो मैं कौन सा पॉइंट ऐसे no no वीकनेस में बताऊं? see you're here in this magazine, in this book I think they have given वीकनेस के लिए, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके हम लोग बोल सकते हैं। Normally I also used to tell people to tell about becoming impatient when things are not done immediately, यस यस but you should immediately say I'm aware of that, I'm trying to find out what are the reasons on account of which such things happen, and I'm trying to get over that, something like that. But you see, if you go on answering it without having confidence in it, then you won't be able to tell it effectively. जितना यस कॉन्फिडेंस से आप पहले बात करते थे, ऐसा में भी करना है। Think ओके सर। whatever answer you are giving is the correct answer. यस सर यस। Have such a belief and then talk, then आपको ठीक हो जाएगा। ओके A सर। good approach to answer to this question is to look out for key skills that are required in the job, and then digging in yourself to find a shortcoming that is non-essential for the job that you are applying for. And on top of that, if you can mention that you have been working on your shortcomings, that will be the cherry on the cake. Tell about the weakness in a brief way and do not go into detail. Sample answer: I get a little nervous while speaking in a large group of people. I am taking a public speaking course online, and this has worked very well for me. Something like that. But यस, ये दिस इज वेरी नाइस पॉइंट। या some exactly नहीं बोलना है, but फिर भी, because if you say that I get more tension when I meet new people, that is wrong. You can say when I meet a lot of people, that is okay. ओके So that's what it ओके is. सर। Any questions? Hello. Yeah, पूछिए यस सर पूछिए। यस सर। Yeah. दूसरा क्वेश्चन भी था एक, कि वो तो यही था कि आप जम्मू कश्मीर में और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्या डिफरेंस देखते हैं? अब वहां से आप कंफर्टेबल जॉब है, यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं? वर्कलोड कम है वहां पे, आप वर्क लोड यहाँ पे ले पाओगे या नहीं ले पाओगे, ऐसा कुछ वो पूछ सकते हैं सर? They can ask you, they can tease you. यस, नॉर्मली women को वो लोग डिस्करेज करते हैं, कैसे? हाउ विल यू वो तुमको वर्कलोड how will you मैनेज। displace, how will you go from one place to another, how will you take up more responsibilities, आपको घर को कैसे सामान लेंगे? In PO interview, that is how they discourage these girls. हाँ, especially married people को बता रहा है, अरे भाई, your husband is in this town, we are going to post you somewhere again यस सर opposite, यस सर। how will you वो manage? बोलते हैं कि अभी, हाँ हाँ, अभी भी बोल सकते हैं कि हम आपको दिल्ली ना दे तो कर्नाटका दे दे, तो फिर तो आप बोलेंगे जम्मू ही ठीक है, क्योंकि कर्नाटका तो सो फॉर डिस्टेंस है ना। वो ऐसे ही बोल देगा वो तो Yeah, ये थोड़े क्वेश्चन थे no, but सर। one, ऐसा no, you ऐसा say, कुछ हो। your answer is correct. You say, I don't mind being posted anywhere in the south also, because there is a possibility for me to get back transfer after 3 or 4 years. ओके ओके सर, ये होता है गर्ल्स के लिए रिलैक्सेशन, कि मैरिड गर्ल्स को अपने होम स्टेट पे या फिर हस्बैंड वाले प्लेस पे सेंड भेज दे Normally, जैसे? I think you asked the other day also, normally they will do. They won't, they are not ओके। interested in separating you. यस सर यस They are सर। not interested in separating you. So you can, mostly they will try to post either Delhi or Haryana, something like that. यस सर नियर बाय Or स्टेट। yeah, or Chandigarh, something nearby क्या, जहां उनको नीड ज्यादा होता है उधर पोस्ट करेगा, डोंट वरी।
But you can lay the preference for Delhi. Nothing wrong in that. Yes, sir. Yes, sir. Good. Next question. Next. Yes, Next please. question. बस ये थे दो बस main question. Okay. No problem. You are one of the हाँ सर, strong. एक और सर, Yeah. एक क्वेश्चन ये भी है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का तो दिन बर दिन छवि जो गुडविल है मार्केट में तो खराब ही होता जा रहा है, क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि 36 लाख का सेंट्रल आरबीआई ने इसको पेनल्टी भी लगाया है, क्योंकि अनऑथराइज कस्टमर की ट्रांजेक्शन हो रही थी, तो 36 लाख का वो पेनल्टी लगाया कानपुर में, कानपुर वाली जोनल ब्रांच में। और अभी जो नहीं, कानपुर वाली जोनल ब्रांच में तो क्या चोरी हो गई थी जो लोकर्स की थी, कितने सारे जो करोड़ों का माल और ज्वेलरी का चोरी हो गई। एक तो वो नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, और एक दूसरा कि आरबीआई ने भी क्या करा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे पेनल्टी भी लगा दी 36 लाख रुपए की, क्योंकि उन्होंने अनऑथराइज ट्रांजेक्शन करी है कस्टमर से। They are putting penalty on many banks, including State Bank of India, Bank of Baroda. सब बैंक को penalty डालते हैं. See, ये सब क्यों होता है? As manager, I have to achieve results. So normally, while I may not mind, I may not do wrong things, but for getting this target achieved, I am forced to do wrong things. I will ऐसा accept. भी होता I है। will accept number 2 deposits. I will give money for somebody else. Sometimes it may be due to pressure of the boss. अभी आपका पहले एक लड़का बात किया था, he is in scale 3 and he is telling that his boss is asking for taking over of an account from one bank, private sector bank, to this bank, public sector bank, and he said, I have listed out all the plus and minus points in the proposal so that I am not held responsible. He is telling that the bosses are forcing you to take some bad accounts also. So Isamapi situation may I am forced to do wrong things. Sometimes man being greedy animal, उनको एक बार वो खराब चीज कर दिया तो हर बार करेंगे। एक बार 10% कमीशन अब लोन को ऊपर में ले लिया, हर टाइम आप लेके जाएंगे, पहले 10 होगा बाद में 20 होगा। Afterwards, once you take some commission from somebody, you cannot enforce rules and regulations and you get attached to them. That's it. This is human nature, and that is the main reason for banks to go bad. The bosses, the political bosses, they influence you to give money to a wrong company. The wrong company wala may or may not give something to you, and if he starts giving, then you become close to him. Finished. Yes, sir. So this is human nature, and I have had personal experiences where I had to restrict the desire to get benefited from others. As a sanctioning authority, how one had to restrain himself from that. That is a very interesting situation. But that is not the reason for my coming out of bank. The reason was the very good package they offered. So I thought, let me come out of it. So this is off this thing. Anyhow, any other doubts you have? Let's not talk about negative things. Be cheerful, be happy, go with confidence. And also one question, sir, should I join Central Bank of India if I selected in Delhi? I told you, even if they post you to my home state, Tamil Nadu, Yes, you please join. Okay. Because you are you will never be able to come to Delhi or Rajasthan in your Jammu Kashmir. Yes, sir. Yes, sir. So you join anyway. So that's why I'm asking you to apply for Bank of India also. Yes, sir. I'm filling form after that interview. Yeah. I think you may not be eligible for Punjab National Bank. Probably. Yes, sir. Yes, sir. Because it is required 1 year experience in financial institution, Yeah, public sector bank also. That so I have not. Very good. So you apply for Bank of India. Let us see. Yes, sir. Yes, sir. Best wishes. Maybe you will come for interview for that also. But Okay, sir. before that, if this is you get this one, fine.
I wish you get this, because your searching should come down, you know. Yes, But sir. you will not stop there. If I understand you correctly, you will try for an NABARD, then SEBI, like Yes, that. sir. Sir, there is, yes, I will try. Definitely, I because will try. because you are, After selecting Central Bank of India, I will try for SEBI and RBI and NABARD. There are three organizations now. After that, yeah. This time, are you applied for RBI grade B? No, no, sir, no, sir, समय नहीं है. अच्छा अच्छा, ठीक है, no problem. सिड भी अप्लाई किया नहीं? no, sir. It's okay, no problem, because that's all scale 1 na, correct. SID B Hmm. maybe scale 1, RBI grade B is a good one. आरबीआई ग्रेड बी में सर थोड़ा मेरे को ऐसे लगता है, मेरा ये थिंकिंग है इसके ऊपर कि एक तो क्या उसमें ग्रेजुएशन का लोग पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या बढ़ता है उससे, और मेरे को ऐसे लगता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होता है क्योंकि बीकॉम ग्रेजुएशन और एमकॉम बेसिस का कैंडिडेट वहां पे पार्टिसिपेट करता है। सेकंड थिंग ये है कि आरबीआई में क्या कि थोड़ा इकोनॉमी लेवल पे पढ़ना पड़ता है, जैसे रूरल इकोनॉमी हो गई, गवर्नमेंट के स्कीम्स हो गए, उससे थोड़ा मेरा सिलेबस हटकर है अलग, तो इसको It's मेरे को a लगता है कि जॉब के साथ साथ मैं थोड़ा टाइम नहीं दे पाऊंगी इस, क्या correct. मैं सही सोच रही हूँ क्या सर ये, जैसे, बट अगर वो कोई सीए का होगा स्पेसिफिक तो वो मैं क्रैक कर लूंगी, उसमें मेरे को पूरा कॉन्फिडेंट है, हाँ ये मैं एग्जाम जरूर निकाल सकती हूँ, बिकॉज इस चार्टर्ड अकाउंटेंट बेस है और आईसीडब्ल्यू बेस है, क्योंकि इसमें खाली सीए ही पार्टिसिपेट करेंगे, नोट की एमकॉम वाले भी बीकॉम वाले भी पार्टिसिपेट करेंगे, दैट्स व्हाई आई एम नॉट अप्लाइंग फॉर दिस Okay, फॉर्म। that's very fine. Thank you. Anything more? ओके, नो सर, नो Best सर, wishes. थैंक यू सर, After attending interview, send me the list of questions. Thank यस you. सर, श्योर श्योर, ओके सर, बाय। Bye.